Only on 3.0 TV. ट्रेडिंग सेल्स वॉल्यूम में 225% के उछाल के साथ बिटकॉइन एनएफटीज लौटी सेकंड पोजीशन पर। एनीबुका ब्रांड्स लेकर आ रहे हैं फॉर्मूला 1 एनएफटीज। पेरिस सेंट जर्मेन एफसी और crypto.com ला रहे हैं मैच डे एनएफटी पोस्टर्स। हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बिटकॉइन एनएफटीज की दमदार वापसी से लेकर सॉकर और फॉर्मूला 1 एनएफटीज तक कई मजेदार एनएफटी अपडेट्स मैं रुचि शर्मा आपके लिए लेकर आई हूँ। तो हो जाइए एनएफटी वर्स के इस खास एपिसोड के लिए तैयार। इसमें आपके फेवरेट एनएफटी प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स तो होंगी, साथ ही हम एक स्पेशल गेस्ट से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं पिछले हफ्ते कैसा रहा एनएफटी मार्केट का हाल। CryptoSlam.io के डेटा के मुताबिक पिछले हफ्ते एनएफटी सेल्स 3.2% की गिरावट के साथ $78.18 मिलियन पर रही। तो वहीं पिछले एक महीने की सेल्स की बात करें तो 34.08% की गिरावट के साथ सेल्स रही $341.37 मिलियन। हमेशा की तरह इथेरियम एनएफटी सेल्स $177 मिलियन के साथ सबसे ऊपर रही। हालांकि इथेरियम एनएफटी सेल्स में भी गिरावट देखी गई है और पिछले एक महीने में इथेरियम एनएफटीज में 41.84% गिरावट देखी गई है। दूसरे पायदान पर 24.86% की गिरावट के साथ माइथोस ब्लॉकचेन ने $31.89 मिलियन की सेल्स दर्ज की। तीसरे, चौथे और पांचवें पायदान पर रही पॉलीगॉन, सोलाना और इम्यूटेबल एक्स। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट कामिल मुंडो का। वेलकम टू 3.0 टीवी। एनएफटी मार्केट लगातार गिर रही है, क्या है इसके पीछे की वजह और कब तक एनएफटी मार्केट रिकवर कर पाएगी? In 2021, what happened was that it was booming. At one point, I think it was 256 million, the trading volume per day. So, of course, it's a lack of knowledge. When something is booming and something is new, many people come to that market without knowing what they're doing. But if we look at NFT product and NFT as general, as a category, there are lots of products that are launching based on NFT. So you cannot think about something that NFT has an end because, like I said before, with the introduction of digital documentation and art, music, everything digitalizing, when I have ownership of something of property and I wanted to have in digital version, of course, NFT is the best solution to that. थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। बिटकॉइन एनएफटीज ने की दमदार वापसी। 225% के जबरदस्त उछाल के साथ बिटकॉइन एनएफटीज ने एक बार फिर संभाली टॉप एनएफटी सेल्स लिस्ट में सेकंड पोजीशन। लौट आई है बिटकॉइन ऑर्डिनल्स की खोई चमक। इसी साल जनवरी में लॉन्च हुए बिटकॉइन ऑर्डिनल्स ने तेजी से सक्सेस का स्वाद चखा। कम से कम 2 महीने तक बड़े बड़े एनएफटी प्लेटफॉर्म्स और ब्लॉकचेन को पीछे छोड़ते हुए टॉप 5 एनएफटी की लिस्ट में सेकंड पोजीशन पर बनी रही बिटकॉइन एनएफटीज। लेकिन फिर अचानक ना जाने क्या हुआ कि जितनी तेजी से बिटकॉइन एनएफटीज ऊपर गई थी उतनी तेजी से नीचे आ गिरी। अगस्त और सितंबर में बिटकॉइन एनएफटी सेल्स ज्यादातर 7वें पायदान पर रही। लेकिन अब एक बार फिर बिटकॉइन एनएफटीज के अच्छे दिन लौट आए हैं। CryptoSlam.io के डेटा के मुताबिक पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन ऑर्डिनल्स की ट्रेडिंग सेल्स वॉल्यूम 225% के उछाल के साथ $1.4 मिलियन रही और इस जंप के साथ बिटकॉइन ऑर्डिनल्स ने एक बार फिर सेकंड पोजीशन पर दावा ठोक दिया है। अगर क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करें तो बिटकॉइन ऑर्डिनल्स ने 2023 के सेकेंड क्वार्टर में $210 मिलियन की ट्रेडिंग वॉल्यूम दर्ज की, जो फर्स्ट क्वार्टर की $7.18 मिलियन की ट्रेडिंग वॉल्यूम से 2834% ज्यादा थी। सॉकर फैंस के लिए अच्छी खबर, पेरिस सेंट जर्मेन एफसी के मैच डे पोस्टर्स को एनएफटी के तौर पर खरीद पाएंगे फैंस। फ्रेंच सॉकर क्लब पेरिस सेंट जर्मेन एफसी ने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज crypto.com के साथ टीम अप कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल से क्रिएट किए हैं मैच डे पोस्टर्स और उन्हें लॉन्च किया है, जिन्हें फैंस एनएफटीज के तौर पर कलेक्ट कर सकते हैं। जनरेटिव एआई का इस्तेमाल करने वाले आर्टिस्ट बेंजामिन ने पीएसजी के लिए ये पोस्टर सीरीज डिजाइन की है। कुल 1970 इनकार्नेशंस में से सिर्फ 7 को बतौर एनएफटी सीरीज रिलीज करने के लिए चुना गया है। आने वाले सीजन में 7 मैचेस के दौरान पेरिस सेंट जर्मेन एफसी इन पोस्टर्स को डिस्प्ले करेगी, जिसकी शुरुआत 24 सितंबर को फ्रांस की लीग 1 सॉकर लीग में ओलंपिक डी मार्सेल के साथ मैच से शुरू हुई।
सभी 7 पोस्टर्स NFTs अकाउंट होल्डर्स के लिए crypto.com NFT प्लेटफॉर्म पर फ्री में एयर ड्रॉप की जाएंगी। हर मैच डे के साथ जुड़े पोस्टर के हिसाब से NFT अवेलेबल की जाएंगी। वो फैंस जो सभी 7 NFTs कलेक्ट करेंगे उन्हें कई तरह के रिवॉर्ड्स मिलेंगे, जैसे कि बेनिचो के ओरिजिनल पोस्टर आर्टवर्क के प्रिंट्स, PSG प्लेयर्स की साइन शर्ट्स, साथ ही टीम के फाइनल होम मैच को अटेंड करने के लिए टिकट्स। चाहे सॉकर हो या फॉर्मूला 1, NFTs का जादू हर स्पोर्ट्स में बढ़ चढ़ कर बोल रहा है। तो अब स्पोर्ट्स एंजॉय कीजिए, डिजिटल कलेक्टिबल्स इकट्ठा कीजिए, साथ ही NFTs के जरिए प्रॉफिट भी कमाइए। एनिमोका ब्रांड्स ने Web3 की दुनिया की अब तक की सबसे एक्साइटिंग डील की है। ऑटोमेकर होंडा, डिजिटल वॉलेट ग्रिफिन और NFT टिकटिंग चैंपियन गेट प्रोटोकॉल के साथ इस पार्टनरशिप के तहत एनिमोका ब्रांड्स ऑफर करेगा फॉर्मूला 1 NFTs। ये डिजिटल कलेक्टिबल्स टोक्यो के फॉर्मूला 1 होंडा इवेंट के साथ साथ रेड बुल वेलकम इवेंट और जापानीज ग्रैंड प्री 2023 के दौरान अवेलेबल होंगे। F1 वेलकम इवेंट अटेंड कर रहे तमाम रेसिंग फैंस इवेंट की लॉटरी और पोस्ट इवेंट एयर ड्रॉप में हिस्सा लेकर होंडा की NFT स्कोर कर सकते हैं। तो वहीं जापानीज ग्रैंड प्री के अटेंडीज सुजुका सर्किट की होंडा बूथ पर अपनी NFTs रिडीम कर सकते हैं। इन फॉर्मूला 1 NFTs को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये कमेमोरेटिव एसेट न सिर्फ एक मेमोरेबलिया के तौर पर रखे जा सकते हैं, बल्कि होंडा के आने वाले इवेंट्स के लिए वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस और साथ ही मेंबरशिप अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं। पोकेमॉन को पकड़ने के लिए अब आपको Web3 की दुनिया को खंगालना पड़ेगा, क्योंकि पोकेमॉन फैंस के लिए अब एनीमे पोकेमॉन के NFT कार्ड्स आ गए हैं। बच्चों और गेमर्स का पसंदीदा पोकेमॉन अब Web3 की दुनिया में दाखिल हो गया है। कोटियार ने एनीमे पोकेमॉन के NFT कार्ड्स डेवलप किए जो पॉलीगॉन पर अवेलेबल थे। पोकेमॉन की पॉपुलैरिटी तो किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में पोकेमॉन फैंस ने चंद सेकंड्स में सारे NFT कार्ड्स खरीदकर पोकेमॉन के फ्लोर प्राइस को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। 2 फेज में चली पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर पोकेमॉन कार्ड्स की सेल में 175 कार्ड्स देखते ही देखते कुछ सेकंड्स में बिक गए। अच्छी बात यह है कि USD कॉइन स्टेबल कॉइन के अलावा ऑर्गेनाइजर्स फिएट मनी भी एक्सेप्ट कर रहे थे। पार्टिसिपेंट्स ने स्टैंडर्डाइज्ड वर्चुअल पैक्स के मिस्ट्री बॉक्सेस भी खरीदे हैं। इन बॉक्सेस के साथ होल्डर्स को एक पोकेमॉन थीम्ड कार्ड मिला है। परचेजर्स 24 घंटे बाद अपने पैक्स खोल पाएंगे, वैसे 48 घंटों बाद ऑटोमेटिकली सारे पैक्स खुल जाएंगे। ऐसे में जबरदस्त पब्लिक इंटरेस्ट की वजह से चंद मिनटों में क्लोज पैक का फ्लोर प्राइस $5 से $50 तक उछल गया। इतना ही नहीं, सुपर रेयर टोकनाइज्ड कलेक्टिबल्स वाले 2000 बेस सेट बूस्टर बॉक्सेस की कीमत $15,000 रखी गई है। Well, that's all in this episode of NFT Verse. वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन NFT की दुनिया से ऐसी ही और मजेदार खबरें मैं रुचि शर्मा आपके लिए हर हफ्ते लाती रहूंगी। Till then, do like, share and subscribe to 3.2 TV और इसी तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें। Hey guys, what's up? So I just want to ask you a few questions. What according to you a gaming should consist? I mean what all components or the wow factor? Oh no, I know you guys might think how do we get rid of this female Supandi? But last question, promise. What according to you should be the key elements or the driving factor of the game? If you ask me, I think games that simply create magic. Magic in the sense people cross borders to meet each other. Okay, just kidding. Unless you're living under a rock, you know how addictive PlayerUnknown's Battleground is. Okay, yaar, sorry. PUBG. Few months ago, PUBG creator Krafton launched a project called Migloo. Now, the South Korean game studio announced that its upcoming NFT-driven metaverse game project will be called Over There and offer the first look at the creation-centric platform. You can choose to be happy now. Something's changed. A soft launch of Over There is scheduled in December and completely released between January and July 2024, according to Krafton. Oh,
And for the game, the business has established its own blockchain known as Settlers. Over there appears to be a Roblox-like mobile game platform developed with Epic Games' Unreal Engine 5 that will provide creators with generative artificial intelligence capabilities to assist gamers in creating their own shooting games, role-playing games, and action role-playing games, among other things. Users will also be able to design custom avatars and talk with one another on the social game platform. The first official teaser shows an open world platform where users can create games and landscapes with AI tools, play a variety of user-generated games, attend virtual concerts, customize their avatars, and more. Over there, plans to introduce a create-to-earn a game economy, allowing players to buy and sell in-game digital assets as NFTs, aiming to provide transparency and secure transactions in the gaming experience. Earlier this year, Krafton announced a project as a joint venture between the studio and Neversee, an augmented reality tech firm. Krafton still holds 85% stake in the project, while Neversee holds the remaining 15%. Krafton and Neversee are utilizing Settlers blockchain for Overdare's economy, enabling gamers to earn funds on Coinbase, and Circle's USDC stablecoin using Cosmos for USDC payments as announced during Korea Blockchain Week. Now let's talk about what's happening in the gaming zone. I'm sure you guys are aware about mobile games coming to the Web3 realm. Web3 games are also hopping onto the mobile bandwagon. Mythical Games is revising its Web3 PC game, Blankos Block Party, and taking the title to mobile gamers. Play and dance and race and shoot and jump and fly with jetpacks or maybe bat wings. And there's lava and a mountain made of junk food. As a result, it will divert all its development resources to repurposing its game for small screen and move its PC version into an ongoing live event. NFL franchise Mythical Games is renaming its game Blankos to appeal the mass market play anywhere generation. The move follows the success of the NFL Rivals game on iOS and Android, which has nearly 2.5 million downloads. Blankos will be completely rebuilt from the ground up, focusing on the mobile-first platforms and cross-play features for PC users. This move marks a new dynamic for the franchisee. The gaming industry is a huge than the music and movie industry combined, as per data from Super Data Research. Statista also states that the gaming industry could gain $334 billion in revenue this year, and exploding topic states the world has roughly 3.09 billion players. Changes to this entertainment medium will impact millions, so we must see how this industry transforms. That's it in today's special segment. For more such updates, follow 3.0 TV or log on to our website www.3versetv.io or scan the QR code to know more. With 3.0 TV, stay connected with the world of blockchain. Stay up to date with infinite world of NFTs. Come explore and evolve with 3.0 TV in the metaverse. So many coins, so much volatility. 3.0 TV delivers the news that matters. नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट मार्केट ने बढ़ती ट्रेजरी यील्ड के प्रेशर के आगे आत्मसमर्पण कर दिया है, जो 16 वर्षों से अधिक समय में उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है और अवेटेड इथेरियम फ्यूचर्स बेस्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को फी की प्रतिक्रिया मिली है।
बिटकॉइन $28,000 के महत्वपूर्ण निशान से नीचे ट्रेड कर रहा था। क्रिप्टो करेंसी का IC15 इंडेक्स 2.8% की गिरावट के साथ 35,570 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा था। एक दिलचस्प खबर में लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज क्यूकॉइन ने बिटकॉइन, ईथर और USDT स्टेबल कॉइन जैसे प्रमुख एसेट रिजर्व्स में गिरावट की सूचना दी है। हालांकि एनालिटिक्स प्रोवाइडर डीफाई लामा के डेटा के अनुसार पिछले महीने क्यूकॉइन से नेट आउटफ्लो $118 मिलियन दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हुए एनालिस्ट ने कहा कि क्रिप्टो मार्केट विशेष रूप से बिटकॉइन में हाल ही में तेजी देखी गई है, जो SEC के ईथर फ्यूचर ETFs अप्रूवल्स और अन्य सरकारी निर्णयों जैसे कारकों से प्रभावित है। पिछले 2 हफ्तों में बिटकॉइन में 15% की बढ़ोतरी हुई है। इसके लिए कुछ प्रॉफिट टेकिंग की आवश्यकता है। US इक्विटीज सोमवार को मिश्रित रूप से समाप्त हुई, जबकि अप्रत्याशित रूप से स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग डेटा ने US इकोनॉमी की रेजिलियंस को रेखांकित करने के बाद ट्रेजरी यील्ड 11 बेसिस पॉइंट्स बढ़कर 4.69% हो गई। ISM फिगर्स फोरकास्टेड 47.7 के मुकाबले 49 पर आए, जिससे पता चलता है कि रेट में और बढ़ोतरी हो सकती है। इस बीच क्रिप्टो एक्सचेंज के कोलैप्स और बिलियंस की कथित चोरी के बाद FTX के फाउंडर सैम बैंकमैन-फ्रीड पर आज मुकदमा चल रहा है। मुख्य गवाहों में पूर्व कलीग्स और मित्र शामिल हैं, विशेष रूप से कैरोलिन एलिसन और गैरी वांग, जिनका FTX और एल्मीडा रिसर्च से गहरा संबंध था। ग्रेस्केल इन्वेस्टमेंट्स ने NYSE आका के कोलैबोरेशन से ग्रेस्केल इथेरियम ट्रस्ट को स्पॉट इथेरियम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में बदलने की अनुमति के लिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन में आवेदन किया है। दिलचस्प बात यह है कि ग्रेस्केल का इथेरियम ट्रस्ट लगभग $5 बिलियन की एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के साथ दुनिया का सबसे बड़ा ईथर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप पिछले 24 घंटों में 2.5% कम होकर $1.09 ट्रिलियन पर था। हालांकि टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम 14% बढ़कर $41.3 बिलियन हो गया। आगे बढ़ते हुए यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस ने रविवार को खुलासा किया कि सिंगापुर के सेंट्रल बैंक ने उसे एक मेजर पेमेंट इंस्टीट्यूशन लाइसेंस प्रदान किया था, जिससे उसे इंस्टीट्यूशनल और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अपनी डिजिटल पेमेंट टोकन सर्विसेज का विस्तार करने की अनुमति मिली। हालांकि US स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ा बदलाव हुआ और फ्यूचर्स S&P 500 में 0.01% की बढ़त दिखी। नास्डैक 100 फ्यूचर्स 0.05% गिर गया, जबकि डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स फ्लैट लाइन के पास फिसल गया। बिटकॉइन 3% की गिरावट के साथ $27,560 पर ट्रेड कर रहा था। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम 4% की गिरावट के साथ $1,660 पर ट्रेड कर रही थी। BNB 2% की गिरावट के साथ $215 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। कार्डानो का EDA टोकन 2.5% की गिरावट के साथ $0.26 पर ट्रेड करता नजर आया। एवलांच AVAX 3.7% गिरावट के साथ $9.4 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। पॉपुलर मीम कॉइन डोज 2.7% की गिरावट के साथ $0.061 पर ट्रेड करता नजर आया। शिबाइनू 3.3% गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था, तो वहीं रिपल का XRP टोकन 2.8% की गिरावट के साथ $0.50 पर ट्रेड करता नजर आया। पोल्काडॉट 3.1% गिरावट के साथ $4.1 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। हालांकि सोलाना सोल 0.8% की बढ़त के साथ $24.3 पर ट्रेड करता नजर आया। पॉलीगॉन मैटिक 1% की बढ़त के साथ $0.56 पर ट्रेड करता नजर आया। आज के लिए कॉइन मॉनिटर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही वेब3 से जुड़ी दिलचस्प खबरों के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड। With 3.0 TV, stay connected with the world of blockchain. Stay up to date with infinite world of NFTs. Come explore and evolve with 3.0 TV in the metaverse. So many coins, so much volatility. 3.0 TV delivers the news that matters.
As the creator of the iPhone seeks to increase its efforts in the field of artificial intelligence, Apple CEO Tim Cook has revealed plans to hire more staff in the UK. Cook stated that the company is hiring in the area and expects investment to increase. AI is a key factor in Apple's products, including fall detection on the Apple Watch, crash detection, AFIB detection, ECG, and predictive typing on iPhone. Cook also mentioned that they are researching more on the development of generative AI. Culture Secretary Michelle praised Apple's decision as a vote of confidence in UK's tech sector, highlighting its global credentials as an AI and technology superpower. Apple also said that it now directly supports more than 550,000 jobs in the UK and has a new office in Cambridge where several hundred employees are engaged in various AI, machine learning, and other projects, according to standard.co.uk. A report by Accenture predicts that small businesses in India that adopt AI and cloud technologies will generate up to $1.6 trillion in annual productivity gains and create 45.9 million jobs by 2030. These jobs are expected to be created in healthcare, education, and agriculture sectors, accounting for 9% of total jobs in the country. The current rate of cloud adoption for all businesses is 28%. A report by AWS suggests that cloud-enabled small businesses in India can unlock $1.1 trillion in annual productivity benefits in agriculture, $199.5 billion in annual productivity benefits in healthcare, and $291.6 billion in education by 2030. This is in line with the United States Sustainable Development Goals. The report also highlights the potential for cloud-enabled small businesses to support 47 million telehealth consultations and provide e-learning solutions to 99 million students in India. Tata Technologies is enhancing its manufacturing processes with artificial intelligence and machine learning, aiming to reduce downtime and pollution. The company is also consistently implementing new technologies, as explained by Yogesh Theo, Senior VP and Delivery Head, Engineering Research and Development. A year-long study of process data revealed that by using AI/ML models, power consumption was reduced by 18%, process quality improved, fuel consumption was reduced by 10%, and chemical consumption was reduced by 8%. The use of AI has also helped identify anomalies, reducing downtime on the shop floor. For example, a paint shop blower can be halted if one fails, causing 7 to 8 hours of repairs. By detecting anomalies just before the failure or shutdown, the company can take corrective action immediately, Yogesh, Senior VP and Delivery Head, Engineering Research and Development, explained. AI has also been used to predict tooling failure in the case of die design. A model can be prepared to predict whether the die will perform optimally or fail by comparing historical operational data with current data. This correlation between operational data and failure cases helps determine the remaining useful life of the die. Ignition sequence starts. 5, 4, 3, 2, 1. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower clear. Hello and a very warm welcome. I am Ruchi Sharma. Back in 1969, the United States succeeded in sending a man on the moon.
Astronaut Neil Armstrong achieved a feat by being the first to step on the moon, said, "That's one small step for man and one giant leap for the mankind." Well, the American boasted this achievement all the while, but few believed it to be a fake and also termed it to be staged event. National Aeronautics and Space Administration, the United States Space Agency, has decided to prove the critics wrong and is planning to use the latest technology, the blockchain, to shut the critics off. The space agency has collaborated with the computing startup based in Florida, Lone Star, and the Isle of Man to send a payload to the moon containing data cubes in February 2024. Interestingly, the trio, NASA, Lone Star, and the Isle of Man, are collaborating together in order to develop long-term solar-powered lunar storage systems that do not need any additional infrastructure. According to a report from the BBC's Science Focus, the test will include the production of digital stamps, also known as digital franking, which will be stored in the form of data cubes on the moon. After the installation of the cubes, the data will be validated using blockchain technology, assuring its accuracy and integrity when it is returned to Earth. To begin with, the scientists will use Isle of Man postage stamps to gauge the storage capacity. In February of 2024, a lunar data cube will be sent to Moon. It will be a black rectangle powered by solar energy and will store a terabyte of data on it. Meanwhile, the launch of Artemis 2 in November 2024 will begin the second part of NASA's Artemis mission, which is the US lunar project. Artemis 2 is intended to be the last test run before the US government sends people back to the moon's surface with Artemis 3. Nevertheless, the same blockchain technology will be verified once for all and irrevocably that humans have touched down on the moon when NASA launched Artemis 3, its second crewed mission in 2025. As a consequence of blockchain's immutable nature, any future astronauts landing on the moon may utilize the data cubes to literally check it on the moon. This technology could make it possible to validate upcoming moon landings and disapprove rumors surrounding earlier lunar trips. That's all in the story for now. This is me, Ruchi Sharma, signing off. Do like, share and subscribe to 3.0 and for more information and stories, log on to our website www.3wordstv.io or scan the QR code. एक तरफ देश में जहां बाघों को बचाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं साथ ही भारत में इनका अवैध व्यापार भी फल फूल रहा है। पिछले 23 वर्षों में इनकी अवैध तस्करी की दुनिया भर में कुल 2205 घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें से 34% यानी 759 घटनाएं अकेले भारत में दर्ज की गई हैं। लेकिन अब और नहीं, अब जंगलों में बाघों से बेखौफ आके चार करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरा। तो चलिए बताते हैं आपको कि बाघों और एआई के बीच क्या कुछ हो रहा है। बाघ तो जंगल में चाहे जिसकी खबर ले सकता है, लेकिन अगर एआई जैसी दुनिया की उभरती तकनीक ने अगर बाघ की खबर ली हो तो उसकी भी कोई खास वजह होगी। जी हाँ, वो तो है। अब ये तो मैं आपसे पूछूंगी नहीं कि बताइए इंडिया का नेशनल एनिमल कौन सा है, लेकिन आप शायद ही जानते होंगे कि टाइगर को हमारे यहाँ सोल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। भाई क्यों ना हो, गठीला बदन, रोबीली चाल, खूंखार आंखें, कमाल का कॉन्फिडेंस। यूं ही नहीं, सारी दुनिया बाघ को सिर्फ देखने भर के लिए पागल हुई जाती है। तो इसकी वजह यह है कि बाघ यूं ही देखने को तो नहीं मिलता, और वैसे भी बाघों की संख्या दिन पर दिन कम हुई जा रही है। लोगों को बाघ का शौक, उसकी खाल का शौक, उसके नाखूनों का शौक और पता नहीं क्या क्या। कोई आश्चर्य नहीं और दुनिया भर में टाइगर बॉडी पार्ट्स की स्मगलिंग
एक बहुत बड़ा और बड़ी लेन देन वाला गैर कानूनी कारोबार है। दुनिया भर में पाए जाने वाले 9 प्रजातियों में से कोई भी इस तस्करी से नहीं बच पाया है, चाहे वो सर्बियन टाइगर, सुमात्रन टाइगर, कैस्पियन टाइगर, जवान टाइगर, इंडो चाइनीज टाइगर, मलायन टाइगर, साउथ चाइना टाइगर, बाली टाइगर या फिर हमारा अपना रॉयल बंगाल टाइगर ही क्यों ना हो। क्या रूपीला नाम है ना, जैसा रूप वैसा ही नाम, लेकिन शायद यही रंग रूप उसकी त्रासदी भी है। कहने को तो टाइगर इंडिया का नेशनल एनिमल है और इंडिया में दुनिया की सबसे बड़ी टाइगर कंजर्वेशन यूनिट भी है, लेकिन यही वह जगह भी है जहां कड़े कानूनों के बावजूद अवैध शिकार आज भी अपने चरम पर है। सख्त कानूनों के बावजूद बंगाल टाइगर जैसी आकर्षक प्रजातियों को तस्करी के गंभीर खतरों का सामना करना पड़ता है। पूरी दुनिया में इस प्रजाति के 4,981 से भी कम मेंबर्स हैं, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा भारत में रहता है। चीन इस एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ स्पीशीज को अंगों और बाय प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। अन्य टाइगर रेंजिंग देशों के इलीगल प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल ट्रेडिंग नेटवर्क के माध्यम से चीन तक पहुंचते हैं। तस्करी किए गए बाघ उत्पादों का उपयोग मुख्य रूप से सजावटी सामग्री या चीनी पारंपरिक दवाओं और शराब के उत्पादन में एक घटक का रूप किया जाता है। बाघ की त्वचा, पंजे और दांत फैशन की वस्तुओं, घर की सजावट, आभूषण, पवित्र सामग्री और बहादुरी का प्रतीक का हिस्सा माना जाता है। मांस, रक्त, हड्डियां, वसा और जनगणना सभी का उपयोग पारंपरिक दवाओं, टॉनिक और विभिन्न बीमारियों के उपचार में सामग्री के रूप में किया जाता है। जब बाघ की हड्डी उबलती है तो यह एक चिपकने वाले पदार्थ में बदल जाती है, जिसे बाघ की हड्डी का गोंद कहा जाता है, जो कई देशों में पारंपरिक दवाओं का एक घटक है। बाघ को अंगों की तस्करी की तीव्रता बाजार की मांग और लोगों की गलत धारणाओं के अनुपात में है। पिछले 2 दशकों में ग्लोबल वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन आधी हो गई है। विभिन्न एनफोर्समेंट एजेंसीज ने 2000 से 2018 के बीच वैश्विक स्तर पर 2359 बाघों के अंगों को जब्त किया है। ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट प्राकृतिक आवासों में आबादी बढ़ाने और अवैध शिकार को रोकने के लिए कड़े कानून लागू करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। मध्य प्रदेश को पारंपरिक रूप से भारत का बाघ राज्य कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारत की बाघ आबादी के 19% और दुनिया के 10% बाघ निवास करते हैं। मध्य प्रदेश में वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल टाइगर्स और अन्य जानवरों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैमरा सिस्टम का परीक्षण कर रहे हैं। ट्रेल गार्ड एआई पोचिंग और मानव पशु संघर्ष को कम करने में मदद करेगा। इंडिया ग्लोबल टाइगर फोरम, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, क्लेमसन यूनिवर्सिटी और रिजॉल्व ने एक एआई सिस्टम डेवलप की है जो बाघों की रियल टाइम अलर्ट्स भेजती है, जिससे उनकी प्रजातियों की पहचान में सहायता मिलती है। रिजॉल्व का कैमरा पगडंडियों के किनारे छिपा हुआ है। जीएसएम, लॉन्ग रेंज रेडियो या सैटेलाइट नेटवर्क्स के माध्यम से मनुष्यों और जानवरों की तस्वीरों वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स तक पहुंचा सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि ट्रेल गार्ड का परीक्षण ईस्ट अफ्रीका के एक रिजर्व में किया गया था, जहां इसने 30 पोचर्स को गिरफ्तार करने और 1300 पाउंड, जो लगभग 590 किलोग्राम से अधिक बुश मीट जब्त करने में सक्षम बनाया। अधिकारियों ने रियल लाइफ सिनेरियोज में एक एआई कैमरा का परीक्षण किया, जिसमें ये दावा किया गया है कि बैटरी चार्ज पर 2500 इमेजेस भेज सकता है। इंडिया में टाइगर पॉपुलेशन 2006 में 1411 से बढ़कर 2022 में 3682 हो गई है। मध्य प्रदेश में कान्हा पेंच सहित 5 रिजर्व्स में एआई कैमरा तैनात किया गया है। आशा करते हैं कि इस नई एआई एनेबल्ड कैमरा की मुहिम से हमारा राष्ट्रीय प्राणी बिना किसी शिकारी के डर के अपने हैबिटेट में फले फूले और उनकी तादाद और बढ़े। और सिर्फ टाइगर ही क्यों, देश की वाइल्ड लाइफ के अलग अलग पशुओं को भी इस नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पोचर्स से बचाया जाए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही दिलचस्प अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें हमारा QR कोड। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट रोशनी शिंगरे। 3 टीवी में आप सभी का स्वागत है। दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्रेज बढ़ रहा है और भारत भी अब कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहा है।
साल 2022 में केंद्र सरकार ने किसानों के लिए पीएम किसान योजना शुरू की थी। इस योजना में सरकार द्वारा दी गई राशि किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट जमा होती है। इस योजना का उद्देश्य छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों की इनकम बढ़ाने में मदद करना है। इस योजना में अभी तक देश के कई किसान जुड़ चुके हैं। सरकार ने 27 जुलाई 2023 को योजना की 14वीं किस्त जारी की थी। सरकार का उद्देश्य है कि देश के सभी किसानों को इस योजना का लाभ मिले, पर अब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसे और आसान करने में मदद करेगी। द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने पीएम किसान योजना के लिए एक एआई चैटबॉट लॉन्च किया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम के साथ इंटीग्रेट होने वाला अपनी तरह का पहला चैटबॉट है। कैलाश चौधरी द्वारा लॉन्च किया गया चैटबॉट एग्रीकल्चर सेक्रेटरी मनोज आहूजा और एडिशनल एग्रीकल्चर सेक्रेटरी प्रमोद महंत्रा द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि एआई चैटबॉट लॉन्च पीएम किसान स्कीम की एफिशिएंसी और रिच बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो फार्मर्स को उनके प्रश्नों को त्वरित, स्पष्ट और सटीक उत्तर प्रदान करता है। जैसे कि इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, एक परिवार में कितने सदस्य इस योजना का लाभ ले सकते हैं, ऐसे कई सवालों के जवाब एआई चैटबॉट से मिल सकते हैं। एक स्टेप फाउंडेशन और भाषिनी की मदद से पीएम किसान ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम ने किसानों को उनके एप्लीकेशन स्टेटस, पेमेंट इंफॉर्मेशन और इनएलिजिबिलिटी स्टेटस के बारे में जानकारी के लिए एक यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म देने के लिए एक एआई चैटबॉट पेश किया है। चैटबॉट जिसे यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है, जिसको भाषिनी के साथ एकीकृत किया गया है, जो एक ऐसा मंच है जो बेनिफिशियरीज की लिंग्विस्टिक और रीजनल डाइवर्सिटी को पूरा करने के लिए मल्टीलिंगुअल सपोर्ट प्रदान करता है। कटिंग एज टेक्नोलॉजी को एकीकृत करने से ट्रांसपेरेंसी में सुधार होता है और किसानों को बुद्धिमानी पूर्वक निर्णय लेने की क्षमता मिलती है। देश की सभी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस का समर्थन करने की योजना के साथ चैटबॉट वर्तमान में अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, उड़िया और तमिल में उपलब्ध है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.TV। ऐसी और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3bustv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें हमारा QR कोड। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। Whether you are an entrepreneur, investment banker, or market participant, You would definitely want to know about mergers and acquisitions, fundraising, and which way millions of dollars are heading in the big deals of the Web3 world. Find out all of that and more on a special show, Deal Corner, every Monday at 6:45 p.m. only on 3.TV. Hello and welcome to 3.TV. I am your host Shikha Singh. Software developer MicroStrategy purchased near $150 million worth of Bitcoin between August 1st and September 24th, it said in a Monday regulatory filing. MicroStrategy, together with its subsidiaries, acquired approximately 5,445 Bitcoins for approximately $147.3 million in cash at an average price of approximately $27,053 per Bitcoin, inclusive of fees and expenses, the company said in the filing. MicroStrategy now holds approximately 158,000 Bitcoin, which was acquired at an aggregate purchase price of approximately $4.68 billion at an average purchase price of roughly $29,582 per Bitcoin. The company said it had sold a total of 403,000 MSTR shares to fund the purchase. In August, MicroStrategy said it may raise up to $750 million by selling more stock and plans to use some of the proceeds to buy more Bitcoin. Cryptocurrencies may encounter with an increased volatility this Friday as a total of 1.217 million Bitcoin and Ether options contracts with a notional value of $4.8 billion will expire on leading crypto options exchange Deribit. Roughly 10% or 117,000 contracts out of the total are tied to Bitcoin, while the rest are Ether options. On Deribit, one options contract represents one BTC and one ETH. Options are derivatives that give the purchasers the right to buy or sell the underlying at a predetermined price at a later date.
Traders or investors track monthly and quarterly options expiries given their propensity to influence markets ahead of and following the settlement. This September, $3 billion in BTC options and $1.8 billion in ETH options will expire, with the max pain level close to current price levels, analysts said. Max pain is the level where options buyers stand to lose most money on expiration. Another feature that makes quarterly settlements important is the hedging activities of market makers or entities tasked with creating liquidity in an order book. Analysts believe the Friday's quarterly settlement price is more likely to be near $26,000 to $27,000 for BTC and $1,500 or $1,650 for ETH. The Writers Guild of America has reached a tentative agreement with the Alliance of Motion Picture and Television Producers after a 146-day strike that crippled Hollywood, the Guild announced Sunday night. The tentative 3-year deal ends the longest strike in the Guild's history and comes after marathon negotiating sessions between the WGA and AMPTP over the weekend. The agreement still needs to be ratified by the W3A's 11,500 members. A key issue in the negotiations was regulating the use of AI in film and TV writing. The W3A sought strict limits on AI-written scripts, while studios wanted more leeway to experiment with the emerging technology. The tentative deal includes groundbreaking additions around the use of AI, though details remain unclear. The strike began May 2 after the previous W3A contract expired without a new deal in place. It brought film and TV production to its standstill, halting work on numerous high-profile movies and shows. That's all in the story. Keep watching 3.2TV for more such updates. Do log on to our website www.3versetv.io or scan the QR code. This is me, Vishakha Thakur, signing off. With 3.2TV, stay connected with the world of blockchain. Stay up to date with infinite world of NFTs. Come explore and evolve with 3.2TV in the metaverse. So many coins, so much volatility. 3.2TV delivers the news that matters. Hello and welcome to 3.2TV. I am your host Vishakha Thakur. Metaverse real estate is expanding at a rapid pace. Several celebrities including Snoop Dogg and global businesses such as PwC, JP Morgan and HSBC have purchased virtual land and are establishing their brand in the virtual world. But virtual real estate is currently going through a turbulence as floor prices of virtual land projects have fallen dramatically between 2022 and 2023. According to a study which obtained data from CoinGecko and Dune Analytics, an average metaverse land costs between 0.37 to 1.09 ETH. Interestingly, the most expensive land is Other Deeds by Yuga Labs project Other Side, which costs around 1.09 ETH. Decentraland is another prominent platform in the metaverse space which currently trades for 0.64 ETH. The cheapest land in metaverse can be found in voxels at an average cost of 0.16 ETH. This is followed by Somnium Space and Sandbox as they trade for 0.37 ETH and 0.43 ETH respectively. Now, if we look at the year 2022, the cost of an average metaverse land was around 7.50 ETH. Around this time, the second most expensive collection of virtual land was Somnium, which traded at 6.05 ETH. Decentraland had the third most expensive collection in 2022 at 5.24 ETH, which was followed by the Sandbox and Voxels trading at 4.20 ETH and 2.59 ETH respectively. If we compare the floor prices of both the years, Somnium had the largest drop of -93.9%,
followed by voxels with minus 93.8%, whereas Decentraland, Sandbox and other deeds fell less than 90%. So let's understand the reasons which led to a decline in floor prices of Metaverse land. The first reason which led to a market downturn were the extravagant prices during the NFT bull market, as they generated an unsustainable bubble. The second reason can be the oversaturation of Metaverse projects, which has diluted demand and is now leading to an increased competition as well as cheaper prices. Furthermore, the early excitement surrounding Metaverse land has faded, prompting investor interest to decline. Lastly, the unpredictable nature of the cryptocurrency market and the general uncertainty surrounding regulatory frameworks have weighed on Metaverse land prices. Well, that's all in this segment. For more such updates, log on to our website www.3versetv.io or scan the QR code. This is me, Vishakha Thakur, signing off. Leading virtual digital assets, VDAs, have surrendered to rising treasury yields, highest level in more than 16 years, and lukewarm response to much-awaited Ethereum futures-based exchange-traded funds, ETF. The counter reported low volume on first day of trading. US stock futures were ticking higher on Tuesday after shares were mixed on Monday, and bond yields rose to the highest since 2007. Futures for the Dow Jones Industrial Average advanced 57 points, or 0.2%. S&P 500 futures also gained 0.2%, as did the technology-heavy Nasdaq. Stocks finished Monday more or less flat, propped up by gains in big tech companies such as Nvidia, Alphabet, Microsoft, and Amazon. The global crypto market cap is $1.09 T, a 2.62% decrease over the last day. Bitcoin's dominance is currently 49.4%, an increase of 0% over the day. Bitcoin was trading at $27,595, down 2.54% in the last 24 hours. Ethereum was trading at $1,657, down 4.3% in the similar time span. All the other major altcoins traded lower. With 3.0 TV, stay connected with the world of blockchain. Stay up to date with infinite world of NFTs. Come explore and evolve with 3.0 TV in the metaverse. So many coins, so much volatility. 3.0 TV delivers the news that matters. नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट रुचि शर्मा। 3.0 टीवी में आप सभी का स्वागत है। रोमन ग्लैडिएटर्स के दौर से लेकर आज के ओलंपिक्स की दुनिया तक खेल कूद के मायने समय के साथ बदल रहे हैं और आजकल न सिर्फ फिजिकल पर ऑनलाइन गेम्स पर भी लोगों का रुझान काफी बढ़ा है। इतने सारे स्पोर्ट्स हैं, इतनी सारी टीम्स हैं, हर कोई टीम चाहती है कि उनके साथ ज्यादा से ज्यादा फैन जुड़ें और वो ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर हों ताकि वो ऑडियंस को एंटरटेन कर सकें। उसी तरह अब एंटरटेनमेंट, ऑनलाइन प्रेजेंस और फैन एंगेजमेंट को जोड़ने के लिए एक और जरिया सामने आया है, वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स क्लब्स मैनचेस्टर सिटी, बार्सिलोना, पीएसजी और दुनिया भर की लीग्स पहले से ही अपनी डिजिटल स्ट्रेटजीज में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं। ब्लॉकचेन का आगाज स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए एक नया मौका लेकर आया है।
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्पोर्ट्स टीम को उनके फैन बेस को मोनेटाइज करने और फैन एंगेजमेंट को सहजता से मजबूत करने में प्रभावी ढंग से सहायता करने में मदद कर सकती है। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री इस नई सेंचुरी के दूसरे दशक में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री मानी जा रही है। द बिजनेस रिसर्च कंपनी की स्पोर्ट्स ग्लोबल मार्केट रिपोर्ट 2023 के अनुसार ग्लोबल स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की मार्केट वैल्यू 5.2% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़कर 2022 में $486.61 बिलियन से बढ़कर 2023 में $512.14 बिलियन हो गई है। 2027 में इसके 5% की CAGR पर $623.63 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। फैन एंगेजमेंट। हम सभी को पता है कि प्रॉफिटेबल होने के लिए बिजनेसेस को कंज्यूमर की आवश्यकता होती है। प्रशंसकों द्वारा टेलीविजन और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर गेम्स देखने, प्रोडक्ट्स की खरीदारी करने और गेम्स की टिकट खरीदने के कारण टीवी राइट्स और एडवर्टाइजिंग अर्निंग्स में वृद्धि होगी। स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने फैंस को शामिल करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करना स्वीकार कर लिया है, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक कदम आगे है। स्पोर्ट्स टीम अपने खुद के वर्चुअल टोकन्स या करेंसीज बना सकती है, जिनका उपयोग सपोर्टर्स गेम्स में टीम स्पेसिफिक गुड्स, टिकट्स और रिफ्रेशमेंट्स खरीदने के लिए कर सकते हैं, जिसकी वजह से ऑपरेशंस अधिक एफिशिएंट हो जाते हैं, जिससे क्लब्स के प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं। टेक्नोलॉजी फैंस पॉपुलर पीयर टू पीयर टिकट ट्रेडिंग की अनुमति दे सकती है, सपोर्टर्स और टीम्स के बीच टिकट्स रीसेल मार्केट के फेयर एडमिनिस्ट्रेशन की अनुमति दे सकती है और फ्रॉडुलेंट टिकट मार्केट से निपटने को रोक सकती है। टिकटिंग स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में ब्लैक मार्केट एक बड़ी समस्या रही है। टिकटिंग में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाकर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन धोखाधड़ी के जोखिम को कम कर सकते हैं और ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि फैंस को अफोर्डेबल टिकट्स तक एक्सेस प्राप्त हो। हर किसी के लिए अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से टिकट्स की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करना और इमीडिएट, शेयर्ड और कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन के साथ एक ट्रस्टवर्दी मार्केटप्लेस में उनको ट्रेड करना भी आसान होगा। डिजिटल करेंसी यूसेज इन स्पोर्ट्स। ये बहुत अच्छी बात है कि बिटकॉइन और अन्य वर्चुअल करेंसीज का स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में पेमेंट मेथड के रूप में उपयोग और स्वीकार किया जा रहा है। इसी के साथ साथ खरीदार अब इसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं, जिसे क्रिप्टो करेंसी की बदौलत सबसे तेज और सबसे सुविधाजनक तरीका माना जाता है। कई स्पोर्ट्स बिजनेसेस के बीच डिजिटल मनी की ट्रांजैक्शंस एक स्टैंडर्ड आइडिया बनती जा रही है। कई क्लब्स और वेल नोन ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने ऑपरेशंस में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को शामिल करके पर्याप्त लाभ उठाया है, क्योंकि टिकट्स और ट्रांसफर सुरक्षित और अधिक ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। कुछ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ने टॉप प्लेयर्स की सैलरीज का भुगतान करने और कस्टमर से फीस कलेक्ट करने के लिए बिटकॉइन का उपयोग करके इसे एक कदम आगे बढ़ाया है। एंटी डोपिंग। हाल के वर्षों में डोपिंग से जुड़ी कई कंट्रोवर्सीज हुई हैं। रशियन हैकर्स ने रियो डी जेनेरो में 2016 समर ओलंपिक्स में कई अमेरिकन एथलीट्स के मेडिकल रिकॉर्ड्स उजागर किए, ये आरोप लगाते हुए कि ये उनकी ओर से डोपिंग का सबूत है। इसमें कई एलीट और वेल नोन स्पोर्ट्समैन शामिल थे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के उपयोग से अब हमारे पास इन डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक लीक से बचाने का मौका है, साथ ही ये भी सुनिश्चित करने का कि कई स्पोर्ट्स फेडरेशन डोपिंग इंसिडेंट्स को छुपाने के लिए डेटा में बदलाव ना करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं रुचि शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। ऐसी ही ब्लॉकचेन से जुड़ी अपडेट्स हर मंगलवार मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3worstv.io पर लॉग ऑन करें या फिर QR कोड को स्कैन करें। Hello and a very warm welcome. I am Ruchi Sharma. OpenSea, one of the biggest non-fungible token exchange, was breached once again. The hack comes after two previous ones, the most recent of which occurred in June 2022, when a third-party contractor was able to download emails of its users and newsletter subscribers and provide a copy to an unauthorized party. An earlier phishing attack in February 2022 stole hundreds of NFTs from 32 users. In a tweet posted on X, previously known as Twitter, over the weekend, OpenSea confirmed the present situation and suggested that application programming interface keys may have been hacked. The current keys, which are scheduled to expire automatically on October 2nd, were advised to be changed out for new ones. No other information was provided by the company. Jason Kent, a hacker in residence at
Sequence Security remarked, "This is a horrible design. If the data repository is reachable and the keys are stolen, a scenario where the data can be obtained by an evil third party exists. Rotating these keys is crucial and it must happen frequently." An attack on the crypto analytics provider Nansen coincided with the OpenSea compromise, and Nansen also announced a breach on its corporate X account. That breach happened a few days back, and that company recommended changing all accounts' passwords. Other than the timing, the two breaches have different attack modalities as far as can be determined from their public statements. There have been no official announcement linking the two breaches. One of the fastest growing toy companies in the world, Jazzwares, has announced that it has signed a master toy agreement with well-known fashion role-playing metaverse experience Royal High for an entirely new toy line that will include fashion dolls that are inspired by video games and will debut in the fall of 2024. In addition, Jazzwares will act as a licensing intermediary for Royal High to develop a broad range of consumer goods through a 360-degree cross-category licensing program, which includes clothes, beauty items, home decor, and more.